Standard 5th Maths Addition and Subtraction Problem Set 13. The Forest Department planted 23,078 trees of khair and 19,476 of bihara besides trees of several other kinds. If the department planted 50,000 trees altogether, how many trees were neither of khair nor of bihara? Now in this question what they are saying कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इतना खैर क्रॉप, इतने ट्रीज जो खैर के हैं और दिस मच वॉज बिहाड़ा, दिस आर द नेम ऑफ ट्रीज, और इसके अलावा बाकी दूसरे प्लांट भी थे. तो बोले टोटल उन्होंने 50,000 प्लांटिंग किए. तो जो दूसरे हैं वो कितने हैं, मतलब इसमें से ये और ये निकाल के दूसरे अलग प्लांट वो कितने हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस वन सम्स ओनली वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. फर्स्ट व्हाट वी विल डू, पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो अलग क्वालिटी दिया है खैर एंड बिहाड़ा, इनको ऐड करेंगे. फिर इनका जो आंसर आएगा द टोटल विच वी विल गेट, दैट आंसर वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, उस आंसर को इससे माइनस करेंगे. सो लेट्स सी सो खैर sapling and bihara saplings, so that is 23,078 and 19,476. So let's add these two first. So 8 plus 6 14, 7 plus 7 14 and 1 15, 4 plus 0 4 plus 1 5, 9 10 11 12, then 2 3 4. So this was the total number of saplings of khair and bihara. Now what we have to find out, which is the other crops. So altogether trees, total trees planted by government is 50,000, okay, and khair and bihara total was 42,554. so which is the extra. अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है. सो ऑल आर ज़ीरो, सो वी विल बोरो फ्रॉम हियर एंड वी विल पास इट टू द लास्ट वन. सो 10 minus 4 6, 9 minus 5 4, 9 minus 5 4, 9 minus 2 7. So that means how many trees are neither? So 7,446 trees were neither of khair nor of bihara. Okay. See, there is one more method. In that method what you have to do, you have to do सब्ट्रैक्शन ट्वाइस. उसमें आपको दो बार माइनस करना है. ये 50,000 में से पहले ये माइनस करना है, फिर जो आंसर बचेगा उसमें से ये माइनस करना है, एंड वहाँ पे भी टोटल आपको इतना ही मिलेगा. सो विच एवर मेथड यू फाइंड इजी यू कैन यूज़ दैट. नाउ लेट्स गो टू सेकेंड सम्स. सेकेंड क्वेश्चन, a city has a population of 37,04,926. if this includes 11,24,069 men and 10,96,478 women, what is the number of children in the city? So अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इतना पॉपुलेशन है एक शहर का जिसमें से इतने आदमी और इतने औरत है. सो कि बच्चे कितने हैं, that we have to find out. So what we will do, we will add men and women and then we subtract from this. So first let's add population of men and population of women.
So men's population is 11,24,69 and so subtraction. So after this we have to add men and women, we will add. So 9 plus 8 17, 7 8 plus 6 14, then 5, then 10, then 12, 2 2. Okay, so this is the total population of men and women. Now what we will do, we have to find out population of children. So this we will subtract from total population. So population of city is how much? 37 lakh and 4,926 minus we will 22 lakh 20,547. So 6 minus 7 not possible. So borrow 16 minus 7 9. Again borrow 11 minus 4 7. 8 minus 5 3. 4 minus 0 4. 0 minus 2 not possible. Borrow 10 minus 2 8. 6 minus 2 4. 3 minus 2 1. Okay. So 14. This is the remaining population of children. So the number of population of children is 14,84,379. Okay, this is the second sums. Third question, the management of a certain factory had 25,40,600 rupees in the labor welfare fund. From this fund, 12,37,865 rupees were used for medical expenses, 8,42,317 rupees were spent on the education of the workers' children, and the remaining was put aside for a canteen. How much money was put aside for the canteen? So see, एक मैनेजमेंट के पास इतना फंड था, ओके, सो उसमें से उन्होंने इतना मेडिकल एक्सपेंस के लिए निकाले और इतने वर्कर्स जो उनके पास काम करते हैं उनके बच्चों के लिए. तो अभी कितना पैसा उनके पास बचा है, इतने पैसे इसमें से निकालने के बाद. सो फर्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दिस टू, ये और ये हम ऐड करेंगे, देन जो टोटल आएगा उसको इससे माइनस करेंगे. सो मेडिकल एक्सपेंस एंड चिल्ड्रंस एक्सपेंस. सो मेडिकल expense and children's education expense, that was and 842,317. So there is no number. Now we have to add this. 5 plus 7 12, 6 7 8, 8 9 10 11, 7 8 9 10, 8 8 9 10, 2. So this was the total expense. So now how much they have kept aside? So expense, so balance fund we will write
welfare fund was 25,40,000. Okay. Total expense 20,80,182. So balance amount. Balance amount is, we have to do subtraction. So 0 minus 2 is not possible. We will borrow from here. First we will give here, then again we will borrow and we will bring here. 10 minus 2, 8. 10 minus 8, 1. 5 minus 1, 4. 0. 14 minus 8, 6. 4, 0. Okay. Was put aside for the canteen. Sorry. For canteen. This is the amount. Let's go to fourth sums now. For a 3-day cricket match, 13,608 tickets were sold on the first day and 8,955 on the second day. If altogether 36,563 tickets were sold in 3 days, how many were sold on the third day? So अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे कि ना क्रिकेट मैच था जो 3 दिन का था, तो उसमें से फर्स्ट डे में इतना टिकट बिका और सेकंड डे में इतने सोल्ड हुए. थर्ड डे का दिया नहीं है, उन्होंने हमको फाइंड आउट करने बोला है, बट उन्होंने टोटल दिया है. टोटल 3 दिन का टिकट इतना सोल्ड हुआ. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड डे, देन वॉट एवर आंसर वी विल गेट, जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर को हम इससे माइनस करेंगे तो हमको थर्ड डे मिल जाएगा. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट डे टिकट, second day ticket, sold. So 13,600 and here 8,000 है ना, so 8,955. So 8 plus 5, 13. 5, 6, here 15, 1 carry, 12, 1 carry, 2. So 22,563. This was the total of 2 days. Now therefore we have to find out third day ticket collection, sold tickets. So that means total tickets sold on 3 days, 36,563, and first and second day tickets was 22,560. Collection of. So third day tickets was, we have to do subtraction. 3 minus 3 0, 6 minus 6 0, 5 minus 5 0, 6 minus 2 4, 3 minus 2 1. So therefore 14,000 tickets were sold on the third day. Okay, this is the fourth sums.